let's start with the equation of motion. So, uh, equation of motion, equation of motion for qk lambda, for qk lambda and pk lambda operators. And what we said about is, in fact, we will be using Heisenberg equation of motion. That is, that is qk. So this is partial derivative with respect to time, qk lambda, which is equals to the commutation relation between qk lambda and the Hamiltonian operator, which is the way we do in Heisenberg equation of motion. And this factor, this is basically qk lambda dot. So one could write it as iota h bar qk lambda dot, which is equals to, then we can write those factors जो हमने पीछे solve किए हुए, times 2 pi c का square times 2 times, so these are all multiplied by iota h capital V. V is the volume, and p k lambda. So this cancels here, and some other factors as well. So जो हमारे पास factor आया iota h bar 4 pi c square, 4 pi c square times pk lambda. So this is iota h bar qk lambda dot. This is one equation. Let it box it. Then we have another equation for pk iota h bar partial derivative with respect to time pk lambda, which is equals to pk lambda h, the Heisenberg equation of motion. Uh, so this would become then pk iota h bar pk lambda dot, which is equals to pk lambda comma h, and then you can solve it by substituting the values. So again, 1 over v is the volume times k square upon 8 pi. ये values हम पीछे से निकाल चुके हैं यानी last time, times minus iota h bar into v times qk lambda. Yeah, and all of these k's have the vector notation above them. So please उसको देख लीजिएगा. So these are vectors. Yeah, so because they represent the direction of motion. And so this would become minus iota h bar k square upon 4 pi times qk lambda. So this is iota h bar pk lambda dot. Yeah. So this is a second equation. Yeah. Then we need to have the time evolution of qk lambda alone. That is we need to sort of isolate those two operators, that is p k lambda and q k lambda, and in order to isolate we substitute one into the other. And so अगर मैं पहली इक्वेशन पहली बॉक्स्ड इक्वेशन को देखूं और उसको मैं सेकंड डेरिवेटिव लूं, तो दैट वुड बिकम क्यू के लैम्डा. दोनों साइडों पर आयोटा एच बार है, दैट वुड आल्सो कैंसिल आउट. तो सो फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स्ड इक्वेशन, सो द टाइम evolution of qk lambda alone that is independent of pk lambda is
from uh, the the first boxed equation, and वो क्या हो जाएगा, that would be क्यू के लैम्डा डबल डॉट आयोटा एच बार दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो दैट वुड रिजल्ट इन 4 pi c² पी के लैम्डा डॉट. देन फ्रॉम सेकेंड बॉक्स इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दें. फ्रॉम सेकेंड बॉक्स्ड इक्वेशन आपके पास क्यू के लैम्डा डबल डॉट. So you substitute the value of pk lambda from the second equation, and what you get is in fact minus k square c square pk, sorry, qk lambda. So this is the equation of motion for qk lambda, which is independent of pk lambda. And similarly, you can obtain similar equation for pk lambda, which is independent of qk lambda. And similarly, similar equation of motion for pk lambda can also be obtained. Yeah. तो वही आप सेकंड इक्वेशन लेंगे, एंड दैट इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, दैट वुड बी पी के लैम्डा. सो दैट वुड बी पी के लैम्डा डबल डॉट, विच इज पी के लैम्डा डबल डॉट एज अ फंक्शन ऑफ पी के लैम्डा. या सो सेकेंड बॉक्स इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, उसको सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव लेने के बाद फर्स्ट बॉक्स इक्वेशन से क्यू के लैम्डा डॉट की वैल्यू राइट साइड पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. यू वुड गेट दी इक्वेशन. आई एम श्योर आप ये कर सकते हैं. ठीक है. नाउ जो अभी तक हमने डेरिवेशन की है, इस डेरिवेशन में वी हैव अज्यूम्ड के जो सॉल्यूशंस हैं क्यू के लैम्डा और सिमिलरली पी के लैम्डा, क्यू के लैम्डा भी फंक्शन ऑफ टाइम है और पी के लैम्डा भी फंक्शन ऑफ टाइम है. बिकॉज अगर आप लास्ट टाइम का लेक्चर उठा के देखें तो उसमें हमने पी के लैम्डा और क्यू के लैम्डा को इन टर्म्स ऑफ टाइम पैरामीटर सब्स्टिट्यूट किया है. और so qk lambda be as a function of time and pk lambda is a function of time, and the solution would be some form of linear combination of uh, two waves which are propagate with two waves which are basically one with a negative k and the other one is a positive k. That is suggesting that the two waves are traveling in opposite direction. Yeah. And so that would be some linear combination of positive and negative exponential solution, because when we talk about a wave, then mathematical representation of such a wave would be some sort of exponential function. So mm, uh, we have uh, assumed solutions, which is basically qk lambda as a function of time is in fact qk lambda at some initial time t is equals to 0 times e to the power minus iota k ct. That is a wave propagating in the negative direction, iota k ct. Similarly, there would be a wave which is propagating in the positive k direction. uh, ये तो हमने किया है, लेकिन हम इससे एक मोर जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो अ मोर जनरल solution would be in the form of form of linear combination of
positive and negative exponential solution. And so we could uh, this would imply that there is a better solution involving both involving both e to the power minus iota k ct and e to the power plus iota k ct exponentials. Yeah. So we could involve both, and that would give us a better solution. So they become so they these two become basis. So they become basis basis solutions. Yeah. For a way which are linearly polarized. Yeah, that is horizontally polarized or vertically polarized. So in using those basis function, using using these basis solutions, हमारे पास q k lambda और q k lambda as a function of time would then become a k lambda. So we are introducing new, in fact, operators ak lambda and then corresponding ak lambda dagger. So that would be e to the power minus iota kct plus ak lambda dagger e to the power plus iota kct. Uh, and so we can now differentiate qk lambda to obtain pk lambda. So pk lambda function of time जो होगा that would be equals to 1 upon 4 pi c square अभी ऊपर हमने किया है that could be q k lambda dot. Yeah. And so it implies 1 upon 4 pi c square d by dt, and then we differentiate this factor a k lambda e to the power minus iota k c t plus a k lambda dagger e to the power plus iota k c t. Yeah. And so what we obtain is then pk lambda is a function of time which is equals to differentiate करने के बाद वैसे टाइम का तो माइनस आयोटा के सी टी फर्स्ट टर्म से नीचे उतरेगा और प्लस आयोटा के सी सेकेंड टर्म से उतरेगा, ठीक है ना, अपॉन 4 पाई सी. सो सी कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले टर्म के अंदर माइनस ए के लैम्डा ई टू द पावर माइनस आयोटा के सी टी और प्लस दूसरी टर्म के अंदर ए के लैम्डा और ई टू द पावर प्लस आयोटा के सी टी. दोनों में से ई टू द पावर दोनों में से एक पहली टर्म में से माइनस आयोटा के सी नीचे उतरेगा और दूसरी टर्म में से प्लस आयोटा के सी नीचे उतरेगा व्हेन यू डिफरेंशिएट द एक्सपोनेंशियल्स. या एंड बोथ है आर कॉमन सो दे आर टेकन आउटसाइड द ब्रैकेट. तो हमारे पास आयोटा के कॉमन आ गया बाहर, सी कैंसिल हो गया पहले से मौजूद 1/4 पाई सी स्क्वायर से, ठीक है. And so these two new operators, that is two new operators, ak lambda and ak lambda dagger, are introduced. Yeah. इनको हम अगर हम कन्वर्ट करें तो ए के लैम्डा और ए के लैम्डा डैगर की इक्वेशन निकाल सकते हैं विद अ स्लाइट चेंज दैट हम सेकंड इक्वेशन के अंदर जब हम ए के लैम्डा डैगर इस्तेमाल करेंगे तो माइनस के की वैल्यू आएगी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम के की जगह माइनस के सब्स्टिट्यूट करेंगे टू ऑब्टेन द सेकंड टर्म. या सो अच्छा एक चीज़ या आप इसी के अंदर कर दें राधा, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर लें, जो दोनों दोनों इक्वेशंस हैं इनको माइनस, सो इसको आप माइनस के ले लें
या और इसमें भी आप इसको माइनस के लेंगे बिकॉज यू वुड सब्स्टिट्यूट हियर, सो ये भी माइनस के आएगा यहाँ पर, दिस इज माइनस के एंड दिस इज ऑल्सो माइनस के, या सो माइनस के इन अ सेंस जो हम यहाँ ऊपर ऊपर कन्वेंशन कह रहे हैं, अगर एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है तो देन द अदर वेव इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड दी एसोसिएटेड जो ये आपके पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं ए के लैम्डा और ए माइनस के लैम्डा डैगर, दे आर बेसिकली responsible for creating a particle which is traveling in the positive x direction and a particle which is traveling in the negative x direction. So annihilation of one vector traveling in the this that direction and creation of the other particle in the other direction and so on. Yeah. Now invert करें अगर हम इन दोनों relations को, so we would have inverting the two relations to obtain ak lambda and ak lambda dagger with a minus sign, yeah, and so equations क्या आ जाएंगी, ak lambda would be, यानी इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को और जो ये ऊपर इक्वेशन है q की, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो यू वुड गेट ए के लैम्डा एंड ए माइनस के लैम्डा डैगर एंड दिस वुड इक्वल्स टू हाफ क्यू के लैम्डा प्लस आयोटा 4 पाई सी ओवर के टाइम्स ई टू द पावर आयोटा के सी टी और ए माइनस के लैम्डा इज इक्वल्स टू विद अ डैगर, सो half, and this is q k lambda minus iota 4 pi c over k p k lambda, oh sorry, p k lambda इधर, so p k lambda bracket close e to the power minus iota k c t, yeah, and you can obtain similar equations for the conjugate as well, यानी q k lambda और पी के लैम्डा की टर्म्स में आपने निकाले, सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन इक्वेशंस फॉर क्यू के लैम्डा डैगर एंड पी के लैम्डा डैगर की टर्म्स में, या सो सिमिलर इक्वेशंस equations can be obtained for their conjugates, that is that is that is that is in terms of q k lambda dagger and p k lambda dagger, या सो दोनों हम निकाल सकते हैं, सो यहाँ पर जो माइनस का साइन है, माइनस के इंडेक्स है, दैट इज बेसिकली ऑन ऑन ए माइनस के लैम्डा डैगर, ये क्या सेंस बना रही है, दिस इज बेसिकली टर्म्स दैट करस्पॉन्ड्स टू अ वेव which is varying as exponential factor e to the power iota k dot r and e to the power plus iota k ct and traveling in the minus k direction, while जो फर्स्ट टर्म है दूसरी यानी फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर अ वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो दीज माइनस के की जो सबस्क्रिप्ट है एंड प्लस के की सबस्क्रिप्ट है, they correspond to waves traveling in the opposite direction, so we can say the so minus k index is used on a
minus k lambda dagger with the sense that this term corresponds to a wave varying as e to the power iota kr and e to the power iota kct। वेरिएशन उसके अंदर इस तरह का है विद सम फैक्टर, रादर इसमें वो फैक्टर भी ऐड करें। वेरिंग एज ई, चलें, e to the power plus iota kct, but moving in negative k direction। while जो दूसरी टर्म है और द दूसरी फर्स्ट इक्वेशन while the other term would correspond to ak lambda e to the power iota kr e to the power minus iota kct, wave traveling in plus k direction। Yeah, so this is basically uh, in fact two waves traveling, and so these new operators rather are introduced because we want to in fact emphasize on the fact that there are two waves which are propagating in the opposite direction and are simultaneously created and destroyed. That is their particle version, that is the quantum mechanical side of those waves are basically particles, and those particles are created in at a point and then propagated in the positive x direction, and a particle created in at a point and traveling in the negative x direction. So we have these two equations, and these two are not Hermitian conjugate of each other. Yeah, and so why not Hermitian conjugate of each other? Because one has the characteristic of creating particle and the other one has the characteristic of annihilation of particle. So they are not Hermitian conjugate of each other. Yeah. So let's emphasize this. These new operators are introduced and are not Hermitian conjugate of each other। ठीक है ना? So uh, uh, we can have a wave vector k. Uh, so for a wave vector k, we can write ak lambda dagger, which is equals to half qk lambda dagger minus iota 4 pi c over k इंटू पी के लैम्डा डैगर। मैंने आपसे कहा था ना यहाँ ऊपर वी कैन ऑब्टेन सिमिलर इक्वेशंस बट नाउ एज अ फंक्शन ऑफ ए के लैम पी के क्यू के लैम्डा डैगर एंड सॉरी ये यहाँ पर हमने कहा। सो दीज आर इक्वेशंस समवेयर, मैंने आपसे ऊपर तस्करा किया ये वाली बात का कि हम ये तो हमने निकाली है ए के लैम्डा और ए के लैम्डा डैगर इन टर्म्स ऑफ क्यू के एंड पी के।
without dagger. We can obtain AK lambda and AK lambda dagger with a plus sign here in terms of QK lambda dagger and PK lambda dagger with the help of QK and PK from the above. So हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि बुनियादी तौर पर ये इक्वेशन हो जाएगी विच इज ई टू द पावर माइनस आयोटा के सी टी. So AK lambda dagger now in terms of QK lambda dagger and PK lambda dagger. So uh, we can check the commutators. So now we have AK lambda and AK lambda dagger. So हम उसका commutator बना सकते हैं. Therefore, the commutator of these AK lambda and AK lambda dagger क्या हो जाएगा? The commutator would be something like AK lambda comma AK lambda dagger which is equals to 1/4 दोनों में से 1/2 दोनों में से आएगा तो that would become 1/4 and then the remaining terms वो क्या हो जाएंगे q k lambda plus iota 4 pi c k और p k lambda कॉमा q k lambda और हम यहाँ पर प्राइम ले लें. So let's talk about prime, yeah, to sort out the integral, yeah. And then we have a dagger here, minus iota 4 pi c over k prime, and we have a p k, so we have a p k prime and lambda prime, and this is close, this is close. So we can then multiply these two factors, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें. सो वी वुड हैव अ सॉल्यूशन विच इज समथिंग लाइक 1/4 पाई. ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, जो भी प्रोडक्ट आएगी उन दोनों में ही कॉमन है, ठीक है ना. सो इसका मतलब है कि वी कैन टेक आउट दिस फैक्टर माइनस आयोटा 4 पाई सी ओवर के प्राइम एक में से, और जो हमारा कम्यूटेटर रिलेशन बनेगा वो किसके दरमियान क्यू के लैम्डा और पी के लैम्डा, पी के प्राइम एंड लैम्डा प्राइम डैगर, प्लस दूसरे में से आप अगेन 1/4 द होल कॉमन फैक्टर है और यही वाला माइनस आयोटा और आधा प्लस आयोटा बिकॉज दूसरे के अंदर प्लस आ जाएगा ये वाला फैक्टर, ठीक है ना. सो दैट वुड बी 4 पाई सी ओवर के bracket close and the commutator between pk lambda and qk lambda dagger qk prime lambda prime dagger bracket close. ये आपके पास आ जाएगा, दो आपके फैक्टर्स आ गए. एंड देन आप इनको इस सिंस दे आर कम्यूटेटर रिलेशनशिप जिनकी हम कम्यूटेशन निकाल चुके हैं, सो दैट वुड बी 1/4. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द कम्यूटेटर जो प्रीवियसली हमने निकाले थे, और वो प्रीवियसली हमने कहीं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने निकाले थे, दैट इज इफ यू रिमेंबर. सो that was something if you remember. So हमने क्यू के लैम्डा कॉमा पी के लैम्डा प्राइम दिस डैगर, और इसको हमने कहा था आयोटा एच बार वी इज द वॉल्यूम डेल्टा फंक्शन के प्राइम and lambda prime, and similarly this was equals to uh, qk lambda with a dagger here and pk
prime, lambda prime, or then you could change the primes on the other one, and so you could obtain the other factors जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं. So इसका मकसद है, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा पहली इक्वेशन जो है, दैट वुड बी माइनस आयोटा 4 pi c ओवर k प्राइम आयोटा h बार v डेल्टा फंक्शन k k प्राइम लैम्डा लैम्डा प्राइम लैम्डा लैम्डा प्राइम प्लस आयोटा पाई सी ओवर के, एंड देन हम चेंज करेंगे तो माइनस आयोटा एच बार, यानी इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो देन वी वुड हैव अ माइनस साइन टाइम्स वी द वॉल्यूम डेल्टा के के प्राइम एंड लैम्डा लैम्डा प्राइम. एंड सो सिंप्लीफिकेशन करने पर हमारे पास जो फैक्टर आ जाएगा, दैट वुड बी 2 पाई एच बार सी वी ओवर के, यानी दोनों फैक्टर्स में से, और दैट वुड बी डेल्टा फंक्शन के के प्राइम और लैम्डा लैम्डा प्राइम. ठीक है. सो ये फैक्टर्स आ जाएंगे, एंड सिमिलरली वी कुड ऑब्टेन फॉर द पेयर ऑफ अदर कम्यूटेटर्स. सो दिस इज इन फैक्ट the relationship for a k lambda and a k lambda dagger, and uh, similar commutators uh, between all other pairs of the AK lambda operators. सो ये हम अलग अलग सबके लिए निकाल सकते हैं. सो दैट इज अप टू यू एज एन एक्सरसाइज. जहाँ जहाँ मैं उसको कंप्लीट सोल्यूशन नहीं कर रहा, आप उसको एज एन एक्सरसाइज घर के तौर पर उसको करें. ठीक है. सो ये जो हम लिख रहे हैं, they are basically somewhat familiar to you, or you have done such in fact calculations, और ये आपने कैलकुलेशंस की थी जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ऑपरेटर्स बना रहे थे. या सो वी कैन से such such calculations are similar to those done for a simple harmonic oscillator. Yeah. So इस अलजबरा को, वट एवर वी आर डूइंग द अलजबरा फॉर फोटॉन्स, मोर सॉर्ट ऑफ ऑब्वियस और मोर सिंपलर, हम एक रीस्केलिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं. दैट इज हमारे पास यहाँ पर फैक्टर जो आ रहा है 2 पाई एच सी वी ओवर के आ रहा है. सो हम इनको रीस्केल करते हैं, और रीस्केल इस तरह से कि इस फैक्टर को हम किसी दूसरे फैक्टर से इंट्रोड्यूस करें सच दैट ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए. दैट इज कॉल्ड रीस्केलिंग. या सो टू मेक द algebra more simpler, uh, for photons, one can
one can rescale the definitions of ak lambda to obtain still new operators जो कि ऑलमोस्ट वही लग रहे होंगे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में गिविंग such that you will obtain a commutator equals to 1 giving commutator equal to 1. Yeah, or on the right hand side, on the right hand side. So क्या हो जाएगा? So this would become a k lambda is equals to, so जो rescaling factor है वो this factor. So we rescale such that the right hand side becomes equals to 1 v over k times a k lambda, and similarly, and so what would happen then? We would have a k lambda, a k prime lambda prime dagger, and this would be equals to किसके बराबर? डेल्टा फंक्शन k prime और लैम्डा लैम्डा प्राइम. सो अब आप देख रहे हैं ये अगर k इज इक्वल टू k प्राइम होगा तो लैम्डा k प्राइम 1 के बराबर हो जाएगा. सिमिलरली लैम्डा